Hello viewers, Assalamu alaikum. I am Shabjil Swati. I hope you are doing fantastic. Let me teach you types of verb. How many types of verb we have? 10 types of verb. Today I am explaining from my video only 5 types of verb because I am not explaining 10 types of verb because our video is long. For this time I am not explaining 10 types of verb. Today I am explaining 5 types of verb. If God wills, tomorrow I will explain another 5 types of verb. We were saying from our video the definition of verb, a word which show action or state is called verb. ओवल पास जो एक्शन और स्टेट जाहिर करते हैं उसे वर्ब कहते हैं। ये हमने अपने वीडियोस में पढ़ा था डिफिनेशन। अब वर्ब की कितनी अक़साम हैं? We have 10 types of verb. हमारे पास 10 अक़साम हैं वर्ब की। आज हम पढ़ेंगे पहला जो अक़साम है हमारे पास वर्ब की वो है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? Those words which second and third form ended by ed, died. Our words जब आखिर खत्मेगी पर ed या d बांधी या ied बांधी आगे के मेरे किदेशी रेगुलर वर्ब लगा संता cry cried cried cry cried cried दा मानुसला example दा करे तो वर्ब वीना तासु दा cry चिदे दा नबा ed खत्म शवे नबा d और नबा ied और सेकंड पामे चिदे मुंग ददली लचला सेकंड और थर्ड पाम चिदे दा बा ed या d या ied बांधी खत्मी सेकंड पाम चिदे मुंग ददले cried नुदा ied बांधी करे ied ददले मुंग पे लोकना दारे दा चिदे जमुसरा वर्ब अदामल हम cried ده زموسر regular verb. أدينا بس زموسر irregular verb. Irregular verb settle. Those words which second and third form do not ended by ed, did. Our words जिदा आगे आखिरने form जिदे आगा पे ed या d या id मा दिना खत्मी की. दल्ले मुकुला जिदा पे id या पे d या id मा दिना खत्मी की अब irregular के बजाय जमुसर पा ed या id या d मा दिना खत्मी की. लगा संता एग्जांपल जमुसर देते हैं cut 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 तो बदी cut 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 कितना सुनी नहीं दा फर्स्ट फॉर्म दे cut सेकंड फॉर्म हम cut और थर्ड फॉर्म हम cut है तो बदी कितना जमुसा ied स्टा ना जमुसा ed स्टा ना जमुसा ied स्टा ना जमुसा ed स्टा देते भी किसी irregular verb दीना पर जमुसा दे finite verb settle those verbs will change with in tenses, number and person. Our word जागा change कई tenses of number और person. आगे तो मेरे किदेशी finite verb. लगा संगा example समझ ले I like my car. जमा खपल गाड़े ख्वाखते या ज़खपल गाड़े like को. No दल्त दी दी रे जमुसरा second example he likes my car. जमुसरा he likes दा जमुसा बदल शो करना. दल्त हमारे कितनी I like my car जमा खपल गाड़े ख्वाखते आगे जमा गाड़े ख्वाखते का आगे चले direct finite verb. जमुसरा बदले non finite verb. Non-finite verb settle. Those verbs which do not change with tenses and number person. Our verb चाहा न बदले change चाहा न बदले tenses या number. आगे तो भी किदेशी non-finite verb. लगा संगा जमुस एग्जांपल है I like driving. जमा driving ख्वाखते. He likes driving. दागी driving ख्वाखते. दादल जमुस दा driving चिदे दा न बदलेगी करना तो दा ले जमुसरा non finite verb दीना बस जमुसरा लास्ट वन 5 नंबर चिकम अक़साम दी दा वर्ब आगे जमुसरा दे transitive verb जमुसरा को 10 टाइप्स दी पुनः जम को वीडियो की जमुसरा 5 टाइप्स दी और सबाब इंशाल्लाह ज़तास्ता 5 टाइप्स दो जमुसरा लास्ट नंबर कम दे transitive verb. What is transitive verb? Those verbs which need direct object to give completely meaning. Our verb
چې هغه موږ ډایرکټ مینینګ راکړي. راځي د ویل کېږي شي ترانزیټیو ورب لکه څنګه I kick. زه کیک کوم خو څه شی کیک کوم ځکه اوس وایم I kick the ball. زه کیک کوم بال زموږ دا دلته پوره معنا راکړه I kick the ball. دا زموږ سره ترانزیټیو ورب. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. امید دی ستاسو د ټولو به خوښ شوي. بلې ویډیو پورې زموږ سره اوسئ په لوی اطلاق سپارم. د الله په امان.